Who cares? So, Assalamualaikum. Good morning, everyone. Let me introduce the guest first. We are having Mr. Forman with us. He is one of my teachers and my mentor and of his studies. He is currently doing his PhD in English literature and he has done his MPhil in English literature, specifically focusing on Sufism and the interpretation of it. And he did his BS from the same university, International Islamic University, Islamabad. Right? As of his interests, he is, his interests are multidisciplinary. He has some Gen Z sensibilities as well. He is a traditionalist who is also a part of Gen Z. You can imagine how a traditionalist can be while being a Gen Z person as well. He is interested in animes, he watches animes, he does nightcore, a lot of songs, and at the same time he is a practicing Sufi as well, right? And let's know him through the interaction and let's let it be an interactive session. Just a quick overview of the layout of this class, this session. I'll be asking him questions about multiple aspects and concepts around us and in this world in Pakistan, and those are considered mostly as controversies, or those have been made as controversies. And after that, we'll open the room for the question and answers for you, and then we'll complete the session. Yeah, welcome, sir. Thank you so much for coming and joining us. Also, by the way, I'm not exactly Gen Z. Gen Z sensibilities don't make you Gen Z. Okay. So, these students are studying critical thinking with me, and we have had an overview of not all the critical theories, because critical theory is not consistent anymore. Everyone is coming up with their own theory, but there are still the hallmarks of every concept. For example, in gender, we have feminism, we have psychoanalysis and psychology, and we have Marxism, capitalism, and economics. So let's begin with the most cited or principal interest of feminism, and we're sitting at FC. And you remember I was the only one boy in my class during my MPhil. So it makes sense that we should start from feminism. Yeah, I think after Gavin case, so the situation has been reversed. Yeah, situation has been reversed. Yeah. This is the example of the brave new world. So yeah, feminism in general, and specifically your point of view as well. When someone says that your point of view, it feels like, okay, I don't know. It's like, my good bunny, okay, something. I mean, depends on what you mean by feminism. Do you know? I mean, आप लोग आगे आ सकते हैं. I mean, like guys, आगे. So, पीछे क्या करेंगे? Yeah. Well, I mean, as I was saying, it depends on what you mean by feminism, right? I mean, if you mean a specific philosophy, then we're going to have to look at the philosophy. फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा उसकी कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं before we can give an opinion on it. Like, last time we checked with us, what version those? Yeah. Right. The other day I ran into libertarian feminism, and I have no idea what it is.
Like I know libertarianism kya hota hai, I don't know libertarianism kya hota hai. But if we generally mean by it, okay, we're talking about the rights over to women, then I mean all for it. फिर आगे बाकी अगर हमें philosophical debate करनी है, then questions such as how do we define rights and where do we draw them from? I mean, let me debate शुरू हो जाती है. So I'm like in these things, I'm like whenever if you are going to follow something, make sure you do it after you study it properly, ताकि आप डिसाइड कर सकें कौन सी वर्जन है, उसमें से कौन से एस्पेक्ट्स आपको ठीक लगते हैं, कौन से नहीं लगते. अगर आपको सारा ठीक लगता है दैट्स फाइन, आपको सारा नहीं ठीक लगता दैट्स फाइन. लाइक मेक श्योर कि आपने पढ़ के किया हो, राइट? बिकॉज frankly speaking at this point ये कहना बहुत जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म. ठीक है, तो खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? या अरे मौज में क्या एंजॉय. So there is another controversy, and it's actually a whole system of government, and we call it capitalism, and it is used by Marxism. Capitalism can be considered as thesis and a long-lasting thesis for us, and Marxism is one of the antithesis, but अभी तक वो सर अभी तक like they're still at loggerheads. Yes, there have been revolutions, but then there have been there is actually there was a counter revolution. उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लिखा था, मैं भूल गया हूँ कहाँ पे, जो they imitated Marx. इन्होंने कहा था ना the spectre of capitalism करके, उन्होंने बकायदा there is a spectre hanging on पता नहीं क्या करके, they wrote a reverse manifesto for against Marxism. I mean Marxism and capitalism. So मैं डॉक्टर सुल्फिकार साहब को पहले एक बार कोट करूँगा. He was like, बेटा अगर आपने पता करना है ना कि मैं क्या मानता हूँ, तो किसी दिन आप इस पॉइंट पे आए, आप मेरे साथ चाय पी सकते हो, फिर मैं बताऊँगा क्या मानता हूँ. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जनरल पॉइंटर्स दूँगा, ठीक है? मेरे से I think he was very smart when he said that, by the way, ठीक है ना? मगर देखिए जब मार्क्सिज्म पे भी आए, frankly speaking, Marxism के critiques of capitalism make a lot of sense, and they're actually pretty good, ठीक है ना? But then, if we're going to talk about Marxism, then you also need to know about anarchism and libertarianism. अभी कौन सी बनाई है? Frankly speaking, मुझे भी कोई 3 साल पहले नहीं पता. So, anarchism is like a kind of left-wing philosophy, which existed alongside Marx. So, Marx there was another guy called Mikhail Bakunin, and like they had a very different view. So, like the Marxists believe in some version of the Marxists की मैं आपको types बताऊँगा. Some Marxists believe, for example, कि we take over the state, we bring about a kind of intermediary state, वो सबके अंदर बराबरी करेगी, and then state will fall apart, or the end. We don't need state anymore. The anarchists were like, the state is evil, guys. If you want a state, you are evil. Okay, so for the anarchists, you don't get out of capitalism by taking over the state. You get rid of the bloody state. You can. Then we have the libertarians. They are like the right-wing version of the anarchists. So, if you ever talk to Marxists, I have a Stalinist friend now. It's like, that's interesting. That is very interesting. It's like okay, I'm a Marxist. I'm a Stalinist. It's like whoa, right? That's new. So, if you ever talk to, for example, Trotskyist or someone, and you ask about Russia, they would say something like, that was not real communism, right? Libertarians are the guys, if you talk to them about capitalism, they're like, this is not real capitalism, guys. We need real capitalism. There's something going on. Okay, so again, before you decide on any one of these, you might want to read all of them first. Again, okay, like in the PhD guys, but at least know what they're saying. Okay, thoda at least बताना चाहिए. Then Marxism के अंदर we have again so many types. ठीक है ना? There are Marxists, for example, who don't like Lenin. There's the Socialist Party of Great Britain is very anti-Lenin. Lenin जब जिंदा था उसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखते थे. They used to say that if you follow Lenin, you're going to get quote state capitalism. Boom. ठीक है? State capital. I like that term. So, again, the thing is,
perfectly fine if you like Marxism or anything. Because हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे personal beliefs पे उससे नहीं आने. मैंने अभी clarify कर दिया था कि मैं थोड़ा सा अपनी beliefs के पास बेशक आ जाऊँगा, but in the classroom I prefer to keep it more academic. चाय पर discuss करेंगे चीज़ें. Now, yeah. So, देखिए, if you like a philosophy because that's the only philosophy you read, then you don't really like that philosophy. You just know that philosophy. Okay? If you like a philosophy because you read its different versions, you looked at the people who don't like it, and then you said, okay, I like this. Or maybe you read all of the versions and then you decided, इसमें से अच्छा लगता है, इसमें से अच्छा लगता है, let me make a cool new mixture. Then you have an actual opinion, ठीक है ना? Because you chose something. Until then you are just like, you know, मैंने classroom में क्या है Marxism पे lecture सुनने आता साउद साहब से, ठीक है ना? I got impressed asking Marxism, like that doesn't make you a Marxist. That just means you're a French guys. Perfect. Now there is another concept and trend going on, which is people believe that it is emerging from West, and it depicts something about East, and they are glamorizing it. They are fascinated by it, especially the writers like Aleph Shafak, and who are broadly praised and acclaimed, and people are very much into liking them, and they're going to buying all of their books. The concept is Sufism. So what do you think about, as a practicing Sufi, what do you think about Sufism in general, and then in West, and now it's your turn to explain. This is my subject, guys. Because this is your subject, and there are a lot of misconceptions about Sufism. Just because a lot of writers like Aleph Shafak, they write beautifully, I agree. It somehow creates a narrative of Sufism for the people who have not known about. The first thing you want to do is, guys, don't take your history from Aleph Shafak. Yeah, exactly. Because first of all, it's a novel. Secondly, personally, I think historical novels should try to achieve some level of accuracy. But a lot of people, they just go like, hey, novel hai na, aapko kya masla hai? So chale, theek hai, novel hai, but aap please novel se history डालें. Thank you very much. जहाँ तक बात है Shafak की, her novel is riddled with historical errors. So if you want to learn about Rumi, like read an actual well-researched book, ठीक है ना? And I don't mean जो popular देखो किताबें निकल आई हैं. Please do not take Rumi from Forman parts. The guy doesn't know Persian, ठीक है ना? There is an interview. There is a guy Franklin Lewis Systems के खिलाफ अपनी book में पूरा section लिखा था कि इसकी translation is गलत है. So there is an interview and you can find it online. I can even send you the link as well as कि कहाँ पर आपको ये discussion का part मिलेगा कितने minutes पे. So the interviewer asks him that Franklin Lewis, who is a biographer of Rumi, is concerned that you mistranslate him, and he responds by saying, I am more in favor of the health of the planet than placing Rumi back in the 13th century. And the point is, अगर आप हमें Rumi translate करके दे रहे हैं, and he's from the 13th century, I mean, what do you expect? वो उठ के आके modern America का member तो नहीं बन जाएगा ना, right? So when we read a translation, we expect to read Rumi. We don't expect to read what you want Rumi to be. ठीक है? I mean, if there is something in him जो हमें नहीं अच्छी लगी, so be it. I mean, उस ज़माने में रहते थे, ठीक है? So yeah. So first of all, we need to find good sources. See, ऐसे चला है जैसे ज़्यादा आ गया. It's like boom. So 1 मिनट के लिए गए. Time शुरू हो गई, guys. भागो. तो anyways, जहाँ तक Sufism की बात है, guys. मेरे को मजाक से कोई बार कहते हैं कि एक तसव्वुफ होता है और एक सूफिज्म होता है. ठीक है ना? I mean, it's a joke, but it kind of makes sense. ठीक है ना? In the modern world, West में भी अब जो academics हैं, they have come to appreciate the actual history of Tasawwuf. ठीक है? हमारे unfortunately जो academics हैं, for the most part, they're still relying on जो books थी जो 300-400 साल पहले लिखी गई थी. ठीक है ना? Which is kind of sad. So देखिए, whenever we're going to talk about a spiritual tradition, चाहे Christians की हो या Muslims की हो या Jews की हो, Sikh की हो, we need to put it in perspective. ठीक है?
the entire debate around Sufism is whether it is universal or Muslim. यहाँ से सारा कुछ घूम फिर के इधर ही आता है. Like every other person who writes on Sufism is either going to say ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये सबको बराबर समझते हैं, और they're going to say बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे मुसलमान हैं, and if they don't like them, they'll be like यार बिल्कुल काफिर टमाटर. That's like the three-four stances जिनके दरमियान सारी debate होती है. But the thing is, history guys, we do not find this movement like this tasawwuf per se, ठीक है ना, out of Islamic culture. बिल्कुल जिस तरह मेस्टर एक्हार्ट जो क्रिश्चियनिटी के जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं उनमें से हैं, we find it in the Christian tradition. So first we need to take history into account. हम ऐसी सिर्फ नहीं बातें कर सकते कि हमारा दिल कर रहा हो हमारा क्या, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि like we read some Sufi poets. So like we read some Sufi poets, but then the thing is कि क्या अगर उसी पोएट ने कुछ प्रोज लिखी थी उसको भी पढ़ा था, या आपने सिर्फ 2-3 शायरी टीवी पे सुन ली थी किसी कवाली में, then you were like okay मुझे सूफीज़्म अच्छा लग गया, और translated by Coleman Marx. तो राइट, अब इसमें विलियम सी चिटिंगलिस की बहुत अच्छी समरी की है इस सारे की. उसने कहा कि देखें, उसने 2 टर्म्स यूज किए हैं, सूफी इंक्लूसिविज्म, सूफी एक्सक्लूसिविज्म. ठीक है, वो ये कहते हैं कि देखें एक तरफ दे आर इंक्लूसिव, but at the same time they do not deny history, they do accept कि हम एक ट्रेडिशन का पार्ट. So I mean हमें उस तरह से, I mean if we're going to look at the tradition properly, तो हमें उसको उसके सारे एस्पेक्ट्स पसंद जो हैं वो मानने चाहिए, ना कि जो अच्छा लग रहा है उसको मान ले और जो बुरा लग रहा है उसको जी हम लाइक कर दीजिए, ये तो था ही नहीं, ये इत्तेफाक से नजर आ गया, right? So keep in mind कि whenever we talk about the Sufi tradition, it exists in a specific culture within specific groups. Before, like अगर आप यहाँ से ना सिर्फ 100 साल पीछे चले जाएं, you will not find non-Muslim Sufis. Interestingly, what happens basically is you find this guy, I mean a bunch of different people, but one of them was Inayat Khan. वो हमारे सिलसिले चिश्तिया जो है ना उसी से है, right? He went to the West and then he was one of those people who were like into जिनसे आगे थोड़ा सा Western Sufism की tradition शुरू हुई थी. मगर अगर हम Western Sufism को देखें उसके बाद हमें New Age की movement ज़्यादा नजर आती है तसव्वुफ से. It's like they're not quoting the actual text of tasawwuf, वो जो रिसाला था और किताबुल ममूजी, किताबुल तारबुश थी, right? The कशफुल महजूब था, like the actual books on which the theory of tasawwuf was based, उनको quote नहीं कर रहे थे जो Western Sufis होते हैं. Okay, एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग नजर आएगी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, जो भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, it is reduced to some kind of 2-3 wise quotes बोल दें किसी राइटर के लिए, and you know it's like stare into the sunset and feel spiritual kind of. There is a novel Rumi's Daughter, उसमें बहुत अच्छा लिखा है, right? You see that entire attitude in that novel. उसमें जो मेन कैरेक्टर है उन्हें कीमिया के ऊपर लिखा है. By the way, कीमिया के ऊपर हमारे पास तारीख में सिर्फ 4 लाइनें हैं, बाकी जो कुछ भी आपको अलग शब्द के हैं जिसके हाथ में सब है कहानी, ठीक है? तो again don't take your history from novels guys. तो like you will be surprised how many people I run into who are like सर मुझे रूमी बहुत अच्छा लगता है. It's like क्या पढ़ा है 40 rules of love. Okay guys. So I mean it's funny if you like 40 rules of love. It's like novel बहुत अच्छा है, no doubt. But guys that's not history. तो खैर हम कहते हैं कीमिया, right? So Rumi's Daughter में the only thing that कीमिया does which seems to make it spiritual is यूं करके देखती है, then she loses. She's a near to this novel, and she's like, apparently that's spiritual, guys. Okay, it's like ये तो मैं दिन में 4 बार करता हूँ, guys. So Sufi. सही मैं कोई मास्टर हूँ यार, अब तक पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ. जितनी भी अगर आप ट्रेडिशनल ऑर्डर्स हैं उनको देखें जो अभी भी अपने उस पर चल रहे हैं, they have very difficult training regimes basically, ठीक है ना? They are generally speaking soft to the public, मगर अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ they are extremely strict. मिसाल के तौर पे जुनैद बगदादी, so a guy came to him to become a student, और वो एक इलाके का बेसिकली गवर्नर थे, सरदार थे, इसका कुछ देता है इसमें, and he was like अच्छा तुम गवर्नर थे, so you'll have a lot of pride. Your first lesson is go back to the place where you were a governor and for 1 year beg. एक साल बाद फिर उन्हें उस इलाके जो वापस आए उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो उस इलाके के अंदर ना जो सबसे ज्यादा बुरी प्रोफेशन समझी जाती है ना, लाइक एज लॉन्ग एज इट्स परमिसिबल, 1 साल आप वो करके आओ, चाहे झाड़ू देना हो या जो भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्या था, ठीक है ना? उसके बाद जब भी जिस किसी से आपकी लड़ाई हुई है, चाहे आप सही थे चाहे वो सही था, जाके माफी मांग के आओ.
By the way, हमारे सिलसिला चिश्तियों में पता क्या होता था? पहले से जूते सीखता, जूते सीखे, और अगर थोड़ा ज़्यादा उसके सर पे है ना, चाहे किसी स्कॉलर का स्टूडेंट है जो भी है, तो किसी और स्टूडेंट की ड्यूटी लग जाती थी कि जाके ना इसकी बैटिंग जरूर कूड़ा रखे. So they had very difficult training regimes, guys. वो kind of syllabus होते थे. It's like it wasn't just कि आप थोड़ी सी शायरी पढ़े, थोड़ा सा फील करें कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, कमाली स्पिरिट और वापस आ जाए. The end, right? It's like the funniest thing in modern Sufism is you know these guys on television who are like ये हमें Sufism से बड़ा लिंक है. Yes, आपको Sufism से बड़ा लिंक है. कभी हमारे पास आके तो हम आपको दिखाएंगे क्या होता है. So guys, like again, read history, read the actual texts. देखें, if you don't like everything about the Sufis, it's fine. But at least don't change our tradition into something it is not. मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बुक्स की लिस्ट करना चाहता हूँ. Comprehensive, but a detailed version of Sufism. I hope कि बहुत सारी नई चीज़ें आपको समझ में मिलेंगी होंगी, और 40 rules of love के बारे में भी. और by the way, there's a lot of fascinating stuff to read. के अंदर it's like not just उनकी theory और उनकी practices के बारे में और history के बारे में. We also theology में भी हमारे बड़े interesting काम है. It's very interesting. अगर आप पढ़ें आपको पता चलेगा कि अच्छा कि इन ग्रुप्स में ज़्यादा थे, कि इन ग्रुप्स में कम थे, उनके आमतौर पर डोमिनेट किस टाइप की प्रैक्टिसेस हैं. So you'll see बड़ी कुछ बात practice. Yeah. So my next question, or the next topic I want you to go towards is happiness and contentment. They are, you know, the very good concept to think about, but at the same time they become controversies when we try to define it, or when we try to clash with other person, or it actually automatically clashes कि जब हम अपना happiness का concept किसी को बता रहे होते हैं तो कोई आप इस कहता है अपना है. And these all postmodern debates, modern debates, and you know, and then we have concept of contentment. In your point of view, how can we, you know, think about happiness and contentment? So कहते हैं हंसा देना. तो I mean, देखिए, as far as I see it, happiness is a short-lived emotion, and contentment is a kind of longer staying attitude. ठीक है ना? Doesn't mean कि contentment means आप हर वक्त content ही होते हैं. You still have stresses and stuff. That's how weird song, by the way. So my last question, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को टाइम देना है, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे. वो कहेंगे कि आपने बुला लिया, सारी आपसी बातें आपस में बातें करते हैं. Yes, जैसे आप अपने लिए बुलाए ना. Here in FCCU we have a liberal arts education system in which students have to declare their major by the 4th semester, for sure. But before that, they have multiple opportunities to read and study a lot of disciplines, including psychology, economics, mathematics, computer science, literature, and then we have minors and majors. But and they also can combine their major, 2 majors, psychology, literature, let's say, and this is how, and 2 minors, 1 major. So it's quite easy for them, but it looks apparently, first it looks apparently very easy, but at the point of deciding, at the point of deciding your major, or deciding a career for yourself at this stage of university, so it becomes very difficult. So my question is, how or what helps you to find your own interest of study? Yeah, I mean, if they be very realistic about things, आप select कर भी नहीं, so you can never really be sure कि आप if you will be satisfied with it. That is the apprehension. Yeah, but the point is कि if you don't choose, then you will definitely never be satisfied with it. Yeah. So, think guys, 2-3 तरह से देख सकते हैं कि we also need to be realistic first of all. हमने कहीं ना कहीं नौकरी भी करनी है, या अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक है ना? या अगर आपको नहीं है और तो हम ऑनलाइन काम करेंगे, बिल्कुल आपने ऑनलाइन काम करेंगे, ठीक है ना? Okay, if you have if your education is going to be tied to your earning, तो फिर you might also want to take that into consideration, थोड़ा सा planning करते हुए, because जो मेरी approach है to things it might not necessarily be very wise to say, ठीक है? Secondly, if your earning is not tied to it, मेरा वैसे ज़्यादा यार जो करना कर. दूसरी चीज़ ये है मगर कि I would say कि you don't need to necessarily choose per se. You need to look at more क्या कहेंगे, इस
इस वक्त क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अपीलिंग या प्रॉमिसिंग लगी है? लाइक मैंने इंग्लिश किया था, मैं भी PhD इंग्लिश में कर रहा हूँ. मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर दिस माई साइकोलॉजी ऑल्सो दोबारा पढ़ूंगा. लाइक आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू दिस, अगर सब चाहते हैं पूरी जिंदगी पढ़ते हैं, बट some of us like to do that. If you don't, then just figure out कौन सी चीज़ आपको लग रहा है कि इसके साथ आपको लगता है कि it's like experiment, read like a couple of things. आपने जो भी subject choose किया, like if you want to really figure out कि आपने वो करना है ना, try like 1 or 2 months जिसमें आप सिर्फ वो चीज़ पढ़ें, उसके अलावा कुछ ना पढ़ें. You will figure out कि आपको बोरिंग है. ठीक है? That's like something practical. मगर frankly speaking, आपको कोई इसका there is no one, but there's like one solution for this. I would say like देखें क्या चीज़ सबसे सही लगती है, बाकी चीज़ में पढ़ते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके, and if you decide कि मैंने वो भी पढ़ना है तो बाद में accordingly करना है. And they can combine it with their major. That's they have this. Like I wish हमारी बारी होता है ना, मैं इनको हमेशा ये कहता रहता हूँ कि काश हमारे पास. I would make sure. Yeah. Psychology में डालता. So well articulated. Again, it's like this might not work for you guys. This is just what I can say. मैंने कहा था जितना मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करके चेक कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. I don't plan things. I just do them. It's like I do it, then I'm like अच्छा ये मैंने क्या किया. Okay, I plan alternate sometimes. I think आजकल I'm making myself plan because वो ज़्यादा काम आ गया. I don't want to die. Okay, so the room is open for students to ask questions. You can ask question about anything. Is it technically the room is closed? Yeah, room is closed, but this imaginary room for questions is now open. So yeah, you should make the introduction. Yeah. So as long as they're lame. Yeah, they should be lame. So yeah, any questions, students? So I just want to ask, what actually is the Tasawwuf? Tasawwuf. Okay, so do you want like the traditional Sufi answer, or do you want to like long history debate? The traditional Sufi Alright, answer. so the traditional Sufi answer will be like जो Islamic sciences है उसके अंदर हमारे पास 3 types. Yeah. Alright, so there is law, which is fiqh, which is what most people specialize in. जितने भी religious sciences में जाते हैं, most of them specialize in fiqh. Second is kalam, which is basically theology. And actually, हमारी theological tradition is pretty fascinating. I mean, you don't need to agree with what someone says, but it's pretty fascinating. Okay? Like, there were people debating on the possibility of atoms in the theological tradition. I think the 3rd generation थी हमारे theologians की, right? So it's very fascinating as long as you read the books. Again, हमारे यहाँ we're too used to reading summaries. Okay? Find the like those giant Arabic books जो ना 10-15 जितने की होती हैं. So you read them, you're like, these are very smart guys. Okay? It's like you read the summary, you're like, I debate gently. It's like not important. Okay, the third is basically spirituality. Because spirituality can have हमारे 3 आपको different किस्म के focuses करते हैं. But this is where we get basically tasawwuf. Among the Sufis, you find 3 different kinds of attitudes, like approaches. One is just ज़्यादा practical कह सकते हैं. For example, you find it with Ghazali. You find it with there was this guy Muhammad Maulud. He wrote a poem. It's called right? It's like a giant Arabic poem. It's like and it's full of puns. वो शुरू करता है, for example, it says something सही याद है बता तो बिल्कुल बिल्कुल बात, which basically means I start with the heart of beginnings. मगर the word heart in Arabic also means revert something, like flip it over. And if you flip bada, it becomes adab, and then in the next line he starts talking about adab. So like, he's pretty smart. So what these guys do is they talk about 2 things. One, they talk about things we call spiritual diseases, things like, for example, stinginess and so on and so forth. जो आपकी connections को खराब करते हैं, socially भी और spiritually भी, and then they're like, how can you fix this? They will come up with creative answers, like मिसाल के तौर पे if you're stubborn and stingy, they might say something like हर रोज बैठ के meditate on death, or they might say something like okay, give more in charity. It's like they might even say कि अगर आपका student है ना उसे जबरदस्ती कहेंगे वहाँ जाओ उस गरीब बंदे को ना इतने पैसे. They do things like that. Okay, maybe don't try that at home. I mean, it's like पहले make sure कर ले कि आपका friend दे सकता है, you know, बेचारे को back up कर दे, ठीक है? The second thing they would do is they would like look at ways to boost basically your spiritual foundation. So that's approach 1. The second thing you find among their texts is a theory,
which is basically based on experiences. So for example, Junaid wrote about how on the path of basically love to God, you have like this circular path. You move from what he called, okay, so again terminology mein hum aa jayenge. So in the Arabic and Persian tradition, words have very specific meanings. ठीक है ना? हमारे यहाँ unfortunately उर्दू में ये है, but we have lost touch with Urdu, so we often say words and we have no idea हम क्या कहें. So love has many types. So we have hawa, we have ishq, we have hubb, we have like let's say 7-8 different types of love. ठीक है? So Junaid says that we move towards ishq first of all, and ishq by the way is by definition a kind of love in which आपकी अपनी हस्ती खत्म हो जाती है. ठीक है? There can be no I want this in ishq. तो जो हमारे यहाँ खास करके टीवी ड्रामा या लव सॉन्ग्स होते हैं, it's like मुझे इश्क हो गया, it's like मेरे हो जाओ, it's like that's not ishq guys. Okay, अगर आपको से इश्क हो गया होता और उसको किसी और से मोहब्बत होती, आप कहते कि क्योंकि मुझे से इश्क हो गया, इसको जिससे मोहब्बत है ये उसके साथ हो जाए. Okay, so please next time अगर आप अपने किसी दोस्त को कहने से पहले कि मुझे इश्क हो गया, सोचने कि आपको होगा right? So you probably don't want ishq if, like in the modern world. Especially with a human being, unless you are ready to be trapped on. ठीक है? तो वहाँ से you get to something called fana. Fana is like losing yourself to the point कि आपको हर चीज का होश खत्म हो जाता है. Okay, some people misunderstand this to mean आपको हर चीज की परवाह खत्म हो जाती है, परवाह इश्क में खत्म हो गई थी, आपको होश खत्म हो जाता है. It's like अगर हमने शायरी की बात करनी हो, तो this is like कि हर सूचल बई दिल ताल दीदम, मैंने हर चीजें जमाने याद दीदम. ठीक है ना? नदीदम ही शहरा खाली अज़वे, उसे खाली किसी चीज को नहीं देखा, पुरज़वे पूछा वो बाजार नहीं. It's like हर जगह बस वही है, right? Then you move to another stage which is like फना अनिल फना, जिसमें आपको इस भूलने का भी होश खत्म हो जाता है. It's like पहले था ना मुझे हर जगह वो नजर आ रहा है. Now it's like बस वही है. It's like मैं भी वही हूँ, मुझे तो अनंत है बेसिकली. It is अनंत. उसके बाद हम मकाम में आते हैं, हम वापस होश में लाते हैं. And then it's like a cycle that moves like this. और मकाम में आके हिजर की कैफियत बहुत ज़्यादा साफ होती है, because you know the world is the abode of separation हमारे यहाँ. So आपके पास सूफी थ्योरी में you have experiences basically, spiritual experiences. मेरे पास कब्ज़ है, बस है, इसकी terminology. It's basically a kind of spiritual psychology. Okay, the third is slightly a theological aspect, which is like theology mixed with spirituality. So वहाँ पे आपको वाहिद वजूद और वाहिद शुरूत और ऐसा चीज़ें मिलती हैं. It's like I'm a wujudi, right? So wujudis are often misunderstood. People think we think that God is in everything. We don't think that God is in everything. We think that the only existence that is worthy of being called existence is God, and everything else is basically just a shadow. ठीक है ना? रूमी ने इसकी मिसाल दी है कि जिस तरह साया पैदा होता है ना, तो असल चीज सूरज है, उसकी रोशनी ने साया पैदा किया है, तो बिल्कुल उसी तरह जो साया है उसकी कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है. So that's how we think reality is, right? So it's like we have a very weird approach to things because of that. ठीक है ना? So this is, so ये हमें main 3 aspects हैं. बाकी I mean दरमियान में और चीजें आती हैं. फिर debates हैं, कुछ सूफी समा को जायज समझते हैं, कुछ नहीं समझते. In other words, there are Sufis जिनके नजदीक कवाली गलत होगी, and then there are Sufis जिनके नजदीक कवाली जो है it is very good. जैसा हम चिश्तिया सिलसिले से हैं, हम कवाली कराते हैं, मगर फिर हमारी कवाली के रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं. जैसे हमारे यहाँ जो आमतौर पर कवाली नाइट्स होती है ना, we think कि this is rubbish basically. We have an entire procedure, फिर हमारी तरतीब होती है, फिर उसके आदाब होते हैं, क्या सुनना है, कैसे सुनना है, किसने सुनना है, किसने क्या सुनना है, किसने क्या नहीं सुनना है. It's like an entire process. So basically practical spirituality, theology and experiences based theory. That's it. Simple short. I mean और complications आ जाएंगे, but आप उस पर PhD नहीं कर रहे, so I think that's next question. Yes, Fazan. मेरा question ये है कि obviously there are different opinions for different aspects and ideologies. Unfortunately, in our society there are extremes और वो बहुत ज़्यादा तादाद में नजर भी आती है. अगर हम सूफीज़म को उनके साथ एक आर्गुमेंट में लेकर डिस्कस करें तो obviously सूफीज़म is a branch of mystical Islam. वो अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को किसी भी फ्रेंड ने गेम पोइट्री म्यूजिक या डांस वगैरह भी उस चीज़ में यूज होता है. Their own representation. How can argue with those extremists जो कहते हैं कि ये चीज़ आपको बगावत की तरफ ले जाती है, या ये चीज़ इन इस्लाम और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इस्लाम हराम है, उस चीज़ को हम किस तरह काउंटर आर्ग्यू कर सकते हैं? Okay, another complex history lesson coming, guys. Okay, पहले तो मैं आपको एक सिंपल जवाब दूंगा.
पंजाबी में शेर है, मेरी पंजाबी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डाउन चली गई है, टू मच फारसी एंड अरबिक एंड इंग्लिश हैव एंटर्ड इट, और मेरी पंजाबी तो प्लीज फॉरगिव मी, बट इट गोज लाइक आशिक होए और अब्दा कोई मलामत लाख तेन काफिर काफिर आप दे तुम आहो आहो आख, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन पॉइंट इज तसव्वुफ में हमारा बेसिकली क्या है, फाइंडिंग द बिलवेड, और हमारे लिए बिलवेड इज गॉड बेसिकली। हमारी डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, हम हर चीज़ को मांग के कहीं से जो है हम ले आते हैं वजूद तक, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं फिर से आपको साबित करना शुरू कर दूँ कि दिस इज ऑल एन इल्यूजन, हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, सो दूसरी बात ये कि देखिए जहाँ तक बात है कि क्या चीज़ जायज़ है क्या नहीं है, ये डिबेट आपको सूफियों के दरमियान भी मिलेगी। मिसाल के तौर पर जो नक्शबंदी सिलसिला है और जो कादरी सिलसिला है वो कवाली को हराम समझते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज फाइन, it depends on how, what matters is how you deal with that difference of opinion. आपने पहले भी तो डिबेट करी थी ना कि वो सूफी जो कहते थे हराम है वो पहले भी थे, वो अब नहीं आए, और जो कहते थे कि जायज़ है वो भी पहले भी थे, अब नहीं है। अबाउट हाउ वी डील विद दीज डिफरेंसेस, उसकी ट्रेनिंग हमारी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि देखें, तीसरी चीज़ भूल गया मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तीसरी चीज़ अपनी ज़हन में रखें कि समटाइम्स यू विल बी सरप्राइज्ड व्हेन यू फाइंड आउट कि तसव्वुफ कहाँ है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारे पास जो, अगर हम इस्लाम की बात करें इस वक्त, जो मुकातब फ़िक्र पाकिस्तान हिंदुस्तान में, बिकॉज देर आर एक्चुअली मेनी मोर ग्रुप्स, ठीक है ना, इस्लाम के, बट जो पाकिस्तान में मुकातब फ़िक्र मशहूर हैं, देवबंद, बरेली, अहले हदीस और अहले तशय्युअ का, ठीक है ना, इस्माइली में। ओके, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट, जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है शियाइज़्म की वो एक्चुअली डिफरेंट है, वो तसव्वुफ नहीं है, वो उसको इरफान कहते हैं, मगर ये है कि देयर हैव बीन 2 or 3 ऑर्डर्स जो ओवर टाइम चेंज उनके साथ मिक्स हो गए थे, बट फॉर द मोस्ट पार्ट हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, दिस वाज मोर ऑफ अ सुन्नी ट्रेडिशन, ठीक है ना, मगर इट वाज लाइक softer on the edges with some people, but again there were strict Sufis as well. अब जो 3 हमारे पास ग्रुप्स रह गए, मैं अहले हदीस तो चले हमें वैसे नहीं समझते। अच्छा, देवबंद और बरेली दोनों सूफी हैं, ये मैं जान के बता रहा हूँ, क्योंकि देखें उनमें से कुछ को सॉफ्ट समझ आता है, कुछ को स्ट्रिक्ट समझ आता है, तो पॉइंट इज दोनों सूफी हैं, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें कौन से सिलसिले का है। अच्छा, फिर कुछ हैं जो इनसे एसोसिएट नहीं करते, ऐसे सूफी सिलसिले भी हैं, सो दोस आर लाइक सूफी सिलसिले जो इनके दरमियान के फिर रहे हैं, लाइक ऐसे यार जिससे जो ठीक का है, क्या जरूरत है। The real problem is how do we deal with differences, ठीक है ना। differences तो नेचुरल है, आप इस क्लास में बैठे हैं, कोई एक टॉपिक लेने आपको 10-15 ओपिनियंस मिल जाएंगे, just don't kill each other guys, ठीक है। तो I mean yeah, so that has to do a lot with public education and how we, और एक चीज़ ये भी होती है कि जिन लोगों ने काम पढ़ा होता है ना अक्सर वो ज़्यादा लड़ते हैं, राइट। सो मेरे को मजाक से कहते हैं बड़ा सूफी तो एक छोटा सूफी होता है, वो बड़ा सूफी होता है। तो जो सीनियर स्कॉलर्स होते हैं ना अक्सर आमतौर पे so maybe we need more education, I guess, maybe we need to practice dealing with differences, I don't know, like solution मेरे पास नहीं है, मैं आपको हल्का बस थॉट्स देते हैं, बाकी आपने फिगर आउट करना हमने क्या करें। I think Aishwa has a question. Yes, sir. Sir, I want to know that what does Sufism says about dreams? Because there are so many theories out there. जिसमें कोई कहता है कि dreams are place for wish fulfillment, या कोई कुछ है जो fluid है या इस तरह से बहुत है। तो what does Sufism has to say about it? Okay, on the top of my head, because I might miss stuff. तो देखिए जो हमारी spiritual tradition है ना, हर spiritual tradition has an approach to dreams. एक तो ये generally speaking हम ये मानते हैं कि dreams 3 प्रकार हैं, ठीक है ना। Those from the self उनके ऊपर आप जो भी अपनी साइकोलॉजी की चीजें सारी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ऑब्वियसली आप सेल्फ पे आ गए तो दैट लाइक इन ड्रीम्स पे सारा दरवाजा खुलेगा, लाइक गो वाइड। अच्छा, देन वी से देयर आर ड्रीम्स दैट कम फ्रॉम बेसिकली Satan, okay, these are usually sometimes nightmares, not always, some nightmares come from the self but some come from there, some desired dreams might also come from there, so like these can overlap somewhat with the other dreams. Then we have dreams that are basically they come from God. But how do we identify them? Well, frankly speaking, we have no solid criteria. Generally speaking, मगर हमारी spiritual traditions में जो approach है तसव्वुफ में,
That is, you do not share your dream except with a genuine, basically, master. ठीक है? मगर उसके अंदर भी अब आम तौर पे we don't interpret them. आम तौर पे we look at them, sometimes we interpret them अगर ज़रूरी हो. Usually we simply just record them, and अगर उसके ऊपर बेस कोई उन्हें देना हो कि आप थोड़ा सा कुछ ये प्रैक्टिस इनिशिएट करने तो there have been some orders जो interpret करते थे, and sometimes दूसरे orders भी कर देते हैं. और आम तौर पे हमारी spiritual tradition has treated them possibly as messages, but generally speaking they have avoided interpreting them. There are some who interpret करते हैं, but like then the whole debate शुरू होती है दोबारा कैसे interpret करें. There was a guy saying he wrote an entire dictionary of dreams, except that there were then a lot of people who later on said कि नहीं इसने गलत लिखा है. So we have like dreams के साथ the problem is कि the criteria is not that open. That is why मिसाल के तौर पे जो Jungians थे, I think Jung was better than Freud in this. अब हम थोड़ी देर ज़रा modern science में आ रहे हैं, because Freud had like a fixed set of interpretations, but Jung was like कि नहीं पहले आप डायरी बनाना शुरू करें ताकि हम समझें इस बंदे के पैटर्न्स क्या हैं, then we interpret them. I think we should move towards concluding the session. But I have a question, the last one. I swear this is the last one. And it sounds like a concluding remark. What is one thing that you hope the students and all of us will leave this discussion with, and why? This will be a takeaway. Why? This will be a takeaway. Yes. Okay, guys, since students हैं तो थोड़ा students को सामने रखते हुए बात करते हैं. देखिए, दो चीजें ध्यान रखिए. Thing number one